And a massive face-off brews over murder of Bengal BJP leader Manish Shukla as the opposition party has decided to hit the streets in Kolkata against Mamata Banerjee government. BJP youth wing has planned a protest march to the state secretariat alleging political killings and worsening law and order situation. There is huge police deployment in Kolkata. The Mamata government has written to BJP asking them not to flout COVID protocols. The state government has closed down the state secretariat ahead of the protests, claiming an ongoing sanitization drive. The state has deployed over 1,000 police personnel to block multiple entry points of the BJP rally towards the secretariat. Water cannons, tear gas shells have been kept for backup by Howrah and Kolkata police to break up the BJP rally. Two TMC leaders have been named in the FIR filed by the Bengal police in BJP leader Manish Shukla's killing. यहाँ की जो हिंसा की राजनीति है उसके कारण पूरा बंगाल के लोग आज पीड़ित हैं, लोग गुस्से में हैं और आज की युवा हर तरह से यहाँ पीड़ित है। इसलिए आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम नवान्न अभियान कर रहे हैं। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है हमारी प्रश्न को उत्तर देने की, इसलिए आज नवान्नों को बंद कर दिए हैं और भाग रही हैं यहाँ परिस्थिति से। ममता दीदी बीजेवाईएम से डर चुके हैं। The moment I landed, the news that I got was she has already closed the CMO. पर ये डर अच्छा है. We like this fear. And this is the sign of real Parivartan in Bengal. And this Parivartan is being led by the patriotic youth of West Bengal, and the rest of the country is with them. All right, cutting straight across to my colleague Manogia Loebal with Kailash Vijayvargiya getting a first-up reaction on India today. भाजपा की ओर से जहां नवान्नों चलो अभियान है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और नवान्नों को बंद कर दिया गया है। क्या कहेंगे कैलाश जी, आज जो तैयारियां हैं इसको देखकर प्रशासन से आपके इस पूरी रैलियों को रोकने के लिए? देखिए, घबराहट है सरकार की चिंता है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण फैला हुआ है और हमारे कार्यकर्ता घर से निकले तो हर जिले में गाड़ियों को रोक दिया गया। पुलिस के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता मिलकर गाड़ियां फोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले कर रहे हैं। बंगाल आज सिद्ध हो गया है कि ममता बिल्कुल पूरी तरीके से घबरा गई है और नौजवान बाहर निकल गया। इतनी शक्ति के बाद भी आप जिधर देखेंगे सड़क पर नौजवान हैं। ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है, ये सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा है, ये सरकार की प्रजातंत्र की हत्या हो रही रोज उसके खिलाफ गुस्सा है, ये हिंसा की राजनीति के खिलाफ गुस्सा है, ये कटमनी के खिलाफ गुस्सा है। ये पूरा जिस प्रकार से अल्फान के पैसों का भ्रष्टाचार किया गया उसके खिलाफ गुस्सा है। यह पूरा कोविड की असफलता, कोविड के मैनेजमेंट की असफलता के खिलाफ गुस्सा है। मैं समझता हूं कि हम इस अभियान में सफल हुए, युवा मोर्चे कार्यकर्ता सफल हुए। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे या तो हमारे कार्यकर्ता और पुलिस, हमारे कार्यकर्ता पुलिस से संघर्ष कर रही है, हमारे कार्यकर्ता को पुलिस मार रही है। मैंने अभी हाल ट्वीट किए हैं कुछ फोटोग्राफ दानकुनी के अंदर। अभी हमारे निशु वर्मा को बहुत बुरी तरह पीटा गया, गाड़ी फोड़ दी गई है। ये सारे जिलों से सूचनाएं आ रही है। पीटा जा सकता है, लाठियों के लेकर तैयार हैं। आपके कार्यकर्ताओं का क्या कहना है और आपका क्या कहना है खुद? देखिए, हम तो अहिंसक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी एक जवाबदार पार्टी इस देश के अंदर, बंगाल में भले ही हम विपक्ष में हो पर देश में एक जवाबदार पार्टी की तरह हम सरकार चला रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। पर हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देंगे और हमारे कार्यकर्ता बहुत शालीन तरीके से इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यही आरोप। All right, Indrajit Kundu is now joining us, reporting live from the Bengal BJP headquarters. Indrajit, what are you picking up in terms of the protest march that the BJP really plans to take out? This is BJP versus TMC again, but this time around there's blood politics on the boil as far as West Bengal is concerned. What are you picking up, Indrajit? Let's try to re-establish that connection to my colleague Indrajit Kundu, and Manogia Loebal will be joining us in just about a bit to get us all the very latest on the Bengal blood politics. This is a stir
over BJP Neta's murder. There's a massive face-off that is brewing. It is BJP versus the TMC. Once again, BJP Youth Wing has now planned to protest to the state secretariat, alleging political killing and worsening of the law and order situation in Bengal under the Mamata Banerjee government. There is huge police deployment, as you can see, in Kolkata. My colleague Manogya getting us all the very latest. Manogya, what's going on? There is huge police deployment, BJP youth workers all ready to protest, but the Mamata Banerjee government does not want them to do so. What's going on? Interesting situation here in Kolkata. I am in southern Kolkata, the Khidirpur area, where you see the planks of these the flyovers that take you straight away to the Vidyasagar Setu and then to Nabanno, which is the West Bengal Secretariat. The deployment will itself give you an idea on how massive it is. Well, it's not just about the forces, but also the equipment and the gadgets that the Kolkata police and West Bengal police have kept ready this time, ranging from water cannons to disaster management force to rapid action force, and even every force that could be deployed possibly here that has been taken out from the reserves today. Almost 2,000 police personnel on every naka have been deployed to ensure that there is no movement of BJP workers, supporters, leaders in any ways. The gathering of BJP is happening just here, just in this building here, where you see people, vehicles, all have been gathering here. This area might look a little vacant, but as far as the rest of Kolkata is concerned, it's completely chock-a-block. The traffic has come to a standstill in most areas of the city, and with that also the kind of movement that you would see normally isn't to be seen. As far as the police deployment is concerned, it's humongous. Almost looks like there is a massive preparation that has been going on with senior police officers from Joint Commissioner of Police, ranging from DIG level officials, even in Howrah and other areas, which have been deployed in several areas, and also monitoring the entire situation. This will also give you an idea on the massive preparations. The purpose of the rally of the Abhiyan, the Nabanno Abhiyan as they call it, is actually... Coming back to you for all that action in just about a bit. Manogya, continue to stay with us right there. BJP to hold for protest rally, but there is a pushback coming in from the Mamata Banerjee government. We'll keep getting you the details as we go along the way. Now to the other big story that is also defining the news agenda. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.